I was attacked on 3rd May 2016 and then he was finally convicted from the Supreme Court on the 23rd of January 2019. तो 3 years की एक battle थी और charges सारे prove हो गए थे और Supreme Court तक केस गया था। मुलजिम शाह हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने खदीजा सिद्दीकी हमला केस में। मुलजिम शाह हुसैन को 7 साल की कैद सुना दी गई है। फैसला सामने आ गया है। ताकतवर के आगे नहीं झुकना, हमें अपनी कमजोरी नहीं दिखानी। सब औरतें जो मेरे साथ सपोर्ट के लिए आई हैं उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। खदीजा सिद्दीकी केस के मुजरिम शाह हुसैन को 5 साल कैद की सजा खत्म होने से तकरीबन 1.5 साल पहले ही रिहा कर दिया गया है, जबकि सवाल उठ रहा है कि एक साथी तालिब इल्म पर खंजर से 23 वार करने वाले शाह हुसैन को सजा खत्म होने से पहले ही सजा में कमी के कानून के बरक्स छूट कैसे दे दी गई है। In May 2016, Shah Hussain stabbed Khadija Siddiqi 23 times in broad daylight. Over the course of the protracted and hard-fought legal battle that followed, Shah Hussain and his team harassed and intimidated Khadija's family on numerous occasions. Shah Hussain was ultimately convicted by the Supreme Court in January 2019 and sentenced to 5 years in prison in what was a significant and highly visible decision regarding gendered violence in Pakistan. But on the 17th of July 2021, Shah Hussain was quietly released, a full 18 months before his original release date, raising serious questions about the integrity of Pakistan's penal system. Soch sat down with Khadija Siddiqi to find out how she feels about Shah Hussein's early release. It was not through any official source. It was a friend of mine who basically told me. So basically I found out a day or two afterwards, after the release, and रिलीज़ के बाद ऑब्वियसली मुझे एकदम से it was shocking और मुझे था कि शायद ये सही ना हो, maybe because I wasn't contacted, I wasn't told through any official source, so it was hard to believe someone else telling me that your attacker has been released. तो मेरे लिए shocking था, and then I said maybe it's not true, maybe I'll be informed by the state, by the jail authorities, but I wasn't informed until or unless the media found out and the media made it, highlighted the case that the convict has been released from the prison. तो वो थोड़ा सा जब इतना ज़्यादा social media pressure आया, that's when the details of the remissions and the release emerged on media. None. My answer would be none. I have been trying to get in touch, even though they should have been the ones who should have contacted me. Yes, there's one female minister of law who contacted me on Twitter, but apart from her, no one else contacted me, and I went to the police to beg for security myself. I had to tell them that my attacker is out and at large, provide me some security. Even though that is still underway, I still haven't received security from the state. Well, the maximum punishment that he could have gotten was of 10 years, and that is what our law states it to be. Yes, एक थोड़ा सा जो मेरे ख्याल में कुताही थी हमारी अपनी तरफ से was that we did not challenge this when he was convicted for 7 years. We should have gone for enhancement of punishment. तो उसमें ये होता है कि अगर आप enhancement के लिए नहीं जाते, उसके बाद उन्होंने अपील की तो 7 years से 5 years हो गई थी. तो 5 years के बाद उसकी acquittal हुई थी 2018 में हाई कोर्ट से. तो आई थिंक हमारा कानून का एक मसला ये है कि even if the charges are proven, हमारा जो sentence होता है that does not commensurate with the magnitude of the crime that is committed. जिस तरह मेरे केस में it was 23 stabs and it was a very very heinous act and in broad daylight. So yes, I think the sentence did not commensurate, but at the same time my case was a precedent case and it went up till the Supreme Court, whereas in Pakistan we see that women usually do not come to court and they do not fight cases. तो मेरे ख्याल में उस सेंस में अगर हम देखें तो सज़ा मिलना was a big thing at that time when I was fighting my case. तो वो it was exemplary, I suppose. So
So basically इसमें होता है कि the IG prison and the superintendent jail, they have the authority, they have the power under the Pakistan prison rules. Pakistan prison rules allow करते हैं for remissions, and the remissions can be granted to, basically they are for the prisoners. तो जो भी conviction लेके आता है जेल में, चाहे वो कोई सी भी जेल हो, उस वो रिमिशंस के लिए क्वालिफाई करता है. लेकिन मेरे केस में थोड़ा सा हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा जेनरस रिमिशंस थी, मतलब जिस कैटेगरी में भी मिल सकती थी वो दी गई हैं, मतलब जो पॉसिबल थी ना इन द लॉ अंडर द रूल्स वो दी गई हैं और मैक्सिमम दी गई हैं. जिस तरह अगर हम ब्लड डोनेशन की देख लेते हैं 1 मंथ दी गई है, हम BA की देख लेते हैं दी गई है, हम इसके अलावा जो है कुरान मजीद ख़त्म करने के लिए वो भी दी गई है. तो मतलब जितनी मैक्सिमम पॉसिबल थी ना वो टोटल अप करके जो है वो 1.5 ईयर्स की बना के उसको दे दी गई, और वो इस तरह जो है वो उसकी अर्ली रिलीज़ हुई है. मुझे लगता है ये जेल रिमिशंस जो हमारे जेल रूल्स, पाकिस्तान प्रिजन रूल्स अलाउ करती हैं, ये रिमिशंस अगर इक्वल फुटिंग पे डिसएडवांटेज्ड पुअर प्रिजनर्स को, पुअर कॉन्विक्ट्स को भी मिलें, बजाय कि सिर्फ उसको जो इसके लिए अप्लाई करे और जो इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता हो, तो फिर ये जो है वो सही है. लेकिन ये अप्लाई इक्वली नहीं करते. आई हैव सीन सो मेनी केसेस, आई एम इवन डीलिंग विद सो मेनी ऑफ दीज केसेस वेयर prisoners have been rotting behind bars since 15-16 years and even more, and they do not have legal representation. Nobody even considered them as citizens of Pakistan just because they don't have the money to fight cases, or they don't have money to pay the fines. तो मुझे लगता है ये अगर ये हमारे आर्टिकल 25 इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द सिटीजन्स के अंदर हम देखें तो फिर ये इक्वली अप्लाई नहीं करते हैं. स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट दैट हमारे जो रिमिशन के रूल्स हैं, जो ये पाकिस्तान प्रिजन रूल्स हैं, इनमें कोई ऐसा मेकनिज़म नहीं है कि जो विक्टिम है या जो कंप्लेनेंट है FIR का, उसको किसी तरीके से इन लूप रखा जाए या उसको इन्फॉर्म किया जाए. तो मुझे लगता है देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर अमेंडमेंट एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर रिफॉर्म. No, I wasn't asked for my consent at all. I wasn't even informed about the release, let alone consent. इसमें तो ये हमारा जो है I think CRPC का इस सेक्शन के अलावा अगर हम जेल रूल्स देख लें, जेल रूल्स के अंदर कहीं भी नहीं है. इवन तो CRPC ओवरराइड करती है इस पे, लेकिन आई वॉजेंट इन्फॉर्म्ड, माई कंसेंट वॉजेंट टेकन. मुझे लगता है कि ये जेल अथॉरिटीज़ की पावर थी जो उन्होंने एक्सरसाइज की, फुली की, और कंसेंट लिए बगैर. हालांकि ये अगर आप जनरली देखें तो चाहे वो रेप विक्टिम हो, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट का विक्टिम हो, अगर कॉन्विक्ट बाहर निकलता है तो कंसेंट नहीं लिया जाता, और किसी किस्म का कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि उसको इन्फॉर्म भी किया जाए या उसकी इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है वो ली जाए. ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है. Well, that depends obviously, because prior to release there is a mechanism to ensure whether the convict is mentally and psychologically fit to enter into the society and to be allowed to roam freely. तो अगर वो वाला जो उसका mental aspect था, psychological aspect उसका देखा जाता है, तो मेरे ख्याल में कि सज़ा का मकसद होता है rehab, सज़ा का मकसद होता है reform. तो अगर वो reform बकौल जेल अथॉरिटीज़ के हो गया है and certified him as have, तो फिर obviously 5 years was also not enough. तो अगर 3.5 years में उन्होंने ये अपना पूरे proper influence use करके और हर चीज़ कर लिए, तो I think मुझे उन्होंने पार्टी भी नहीं बनाया केस में, and they made sure कि मुझे किसी तरह पता चले बगैर जो है वो उसका रिलीज़ हो, and they actually succeeded in that. तो आई थिंक ये बड़ा एक जो है ना सुपरफिशियल सा लगता है कि मुझे मेरा कंसेंट मांगा था, मुझे तो स्टेट ने इन्फॉर्म नहीं किया. सो इट्स अगेन अ क्वेश्चन मार्क ऑन द लीगल डायमेंशंस ऑफ द केस कि किस तरह हमारे कानून को एक्सप्लॉइट किया जाता है बाय पीपल हु हैव दैट इन्फ्लुएंस. मुझे लगता है अप्रोच थोड़ी सी misogynist approach तो है ही, because the response that we received from our minister was a bit
it took me aback because the response on Twitter, it stated that media campaign, Shah Hussain की release के media campaign का drop scene. So you're actually calling you're bringing my struggle to this extent that you're calling it a drop scene, even though my safety, my security is at risk. And so it was a bit shocking, but I think it was too petty to be commented on. मुझे लगता है कि early release जो है वो deterrent not for the offender, but deterrent है for the victims of violence in our country, because वो जो victims हैं वो कह रही है कि हाँ, अगर हम जाते भी हैं legal battle लड़ते भी हैं और समझे 3 साल की, 4 साल की, 7 साल की सज़ा हो भी जाती है, तो वो in any case 2 या 3 सालों में इसका मतलब है निकल जाएंगे, स्पेशली इफ़ दे आर इन्फ्लुएंशियल ऑफेंडर्स और उन्होंने कोई क्राइम किया हुआ है ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड या कोई ऐसा और उनको सज़ा कम होती है. तो मुझे लगता है कि ये सज़ा का जो मकसद है वो पूरा होना चाहिए और फीमेल्स शुड नो दैट देयर इज़ ऑलवेज होप एट द एंड ऑफ द टनल. ये ना कहें, क्योंकि काफ़ी लोग हैं, काफ़ी फीमेल्स हैं जो मैसेज करके कह रही हैं कि वी हैव लॉस्ट होप इन आवर जुडिशियल सिस्टम, वी डोंट थिंक दैट criminal justice system in Pakistan can never give us justice, we'll keep struggling, our voice will not be heard. मुझे लगता है कि हाँ, शायद टू सम एक्सटेंट वो इतनी ज़्यादा जो है ना हेल्पलेस हो गई हैं और होपलेस हो गई हैं, बट स्टिल आई वुड मेरा एक मैसेज होगा टूवर्ड्स ऑल ऑफ देम कि डू नॉट गिव होप, बिकॉज किसी की जो स्ट्रगल है ना वो कभी ज़ाया नहीं जाती. मुझे लगता है माई स्ट्रगल डिड मेक अ मार्क इन पाकिस्तान, और जो सज़ा हुई थी दैट वाज एग्जाम्पलरी, एंड आई थिंक such examples should be set in the society, because obviously if you are on the right path you will have a lot of opposition, but once you take charge and once you show the people that this is what wrong was done to me and this is how you fight for justice, so I think कुछ ना कुछ अल्लाह ताला भी आपको हेल्प करते हैं और कहीं ना कहीं से रास्ता बन जाता है. So yes, keep your struggle alive. I'll have to see, because there are so many things that I have to take into consideration before I make up my mind to do that. But let's see how things work out. But I can't give a definite yes or no on that. But yes, you can go into the writ jurisdiction, especially because in my case, the jail authorities still haven't responded to my letter that I sent to them, basically inquiring the grounds of release and how, this basically the remissions that were sent, they were sent only because Geo News basically requested for these details. They weren't released to me, they were released to Geo Television, and they were released on the request of a media channel. So they weren't released to me officially. So I have written to the jail authorities and I'm waiting for their response, and I'm hopeful that they will respond to me. Obviously if they don't, then I will try my level best to take this to the legal resort. Obviously, I think not only my concerns, but the concerns from all the women of our society who are questioning the release now, especially the early release, all of them, they have one question in mind: is he sane enough to live in our society? Because the kind of attack that he made on me, it was horrific and it was heinous to every extent. तो लोग, आई थिंक मेरे जितने भी सवाल हैं वही सोसाइटी के सवाल हैं, एंड दिस आउटरेज, दिस अप्रोर ऑन सोशल मीडिया एंड ऑन ट्विटर, इट वाज फ्रॉम द सोसाइटी, इट वाज फ्रॉम पीपल हु फील अनसेफ. तो शायद मैं ही सिर्फ अनसेफ नहीं फील करी, बट पीपल अराउंड आर फीलिंग सेफ, स्पेशली वुमेन, कीपिंग इन माइंड द सीरीज ऑफ violent attacks on women in our country in the past few weeks and the surge in the attacks. मुझे लगता है women are not feeling safe at all. The kind of messages they're sending me, that they're hopeless, they thought that my case was a precedent case and it was a hope of light for them. But अब फिर मुझे लगता है कि it's the system that fails in the end. Even if you try your level best, I tried my level best, I took the case till the Supreme Court, I did whatever was in my capacity. मुझे लगता है हर चीज़, मतलब हर legal avenue मैंने exhaust किया till the end.
तो दैट इज़ अगेन अ प्रेसिडेंट. मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई ट्रेविस्टी है, मतलब हर चीज़ जो है वो इन वेन चली गई. नहीं, एन एग्जाम्पल वॉज सेट. आई शोड द वुमेन ऑफ पाकिस्तान दैट दिस इज़ हाउ यू फाइट फॉर योर सेल्फ, दिस इज़ हाउ यू फाइट फॉर जस्टिस when you're wronged. And yeah, so I think it's an example. I think it's the society who is responsible, because our society allows for this toxic mentality and this toxic masculinity. ये जो हमारा मेल डोमिनेंट मिसोजिनिस्ट माइंडसेट है ना, ये हर चीज़ को इनेबल करता है. ये कहता है कि जी चलो क्या ही हो गया, हरास ही किया था ना, कोई हाथ तो नहीं लगाया, उसको तंग तो नहीं किया, उसको रेप तो नहीं किया, यू नो. ये छोटी छोटी चीज़ों को आप इतना ट्रिवियलाइज कर देते हैं दैट यू नो स्टार्ट इनेबलिंग इट एंड यू बिकम बेसिकली पार्टी टू इट. तो मुझे लगता है कि ये हमारे अंदर इतना इनेट आ गया, ये वाला एटीट्यूड टूवर्ड्स क्राइम्स, के हम उसको इनेबल करते हैं. तो यस, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल एज अ सोसाइटी इफ वी डू नॉट कॉल आउट सेक्सिस्ट रिमार्क्स ऑफ आवर फेलो मेल कॉलीग्स. वी आर party to it and we are helping it grow, and we are, you know, basically we're not stopping such kind of remarks. And I think that's the main problem. The mindset needs to be tackled in a way that everyone should play their part in this.